Today we have with us Shriya Pilgaonkar and Jayant Somalkar, who will be talking to us about their upcoming web series, Guilty Minds. So first of all, thank you so much for joining us. Thank you. So Shriya, you play a lawyer in this series. Yes. So how was the prep like? Kashaf Kaze, well, she's quite a force to reckon with, and so my director Shefali, she comes from a family of lawyers, so she knows this world very intimately, very closely. So for me, my reference point was conversations with Shefali, but at the same time, I spoke to a lot of my lawyer friends because I think it was important to understand, more than getting into the legality of it, it was important to understand who these people are. Because every lawyer is a different personality. What they bring to the court is a different persona. So I also attended a few sessions. I went to the High Court, and I was so surprised. I said, where is the drama? The drama that we're used to watching, right, on screen. So this show, Guilty Minds, it sort of has shown this world very authentically and realistically. And every episode has a different case, which was very fascinating. And I think the challenge for me personally was to make sure that it doesn't seem like you're trying too hard to be a lawyer. It should just seem as natural. So I think it was a mix of many things. And Kashaf is a beautiful character because she's somebody who has very high morals and is very righteous. She feels very deeply about certain issues, and for her that's her driving force to be a lawyer. But it can be very hard for Kashaf to deal with people who perhaps think differently from her because she's very stubborn as a person, which is why Kashaf only ends up making life difficult for herself. Wo jiddi hai, as they said. So it was interesting because Kashaf is very different from who I am as a person, but there are also some similarities. आपके पास ये आइडिया, मतलब आपको ये आइडिया कब आया कि आपको गिल्टी माइंड्स नाम का एक वेब सीरीज बनाना है? मतलब ये जर्म ऑफ आइडिया कब हुआ? ये आइडिया लाइक शेफाली एंड आवर को-राइटर लाइक मानव भूषण, मानव, और उन्होंने पहले मानव also has studied law. तो मानव ने लॉ पढ़ा भी है, लेकिन वो प्रैक्टिसिंग लॉयर नहीं है. और वन मोर राइटर इज दीक्षा गुजराल, शी इज प्रैक्टिसिंग लॉयर. तो मानव और शेफाली ने पहले डेवलप किया था कि यार कुछ करते हैं, क्योंकि दोनों लीगल फैमिली से आते हैं, तो आपके पास एक बैकग्राउंड भी है. और इंडिया में उस टाइप के बहुत सारे लीगल शोज़ नहीं, अभी आ रहे हैं, बट उस वक्त उसने शो नहीं थे. मैं 4 साल पहले की बात कर रहा हूँ. तो उन दोनों शुरुआत की बाद में मैं दीक्षा ज्वाइन किया हमने, और हमने लीगल ड्रामा ही इसने की बैकग्राउंड इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें कुछ मुद्दों की बात करनी थी, कुछ जो कंटेम्प्रेरी हो, कुछ सोशल मुद्दे, कुछ पॉलिटिकल हो, कुछ हम चाहते हैं कि डिबेट हो, ना कि जस्ट एक क्या बोलते हैं टिपिकल एक कोर्ट रूम ड्रामा हो, लेकिन एक डिबेट हो, लोग देखने के बाद उस पर सोचें. दोनों बाजू, लाइक कोई भी क्राइम है या कोई भी अपराध है, उसको दोनों बाजू से आप डिस्कशन हो, दोनों को एक मौका मिले, लोग फिर डिसाइड करें. जजमेंट, देखो जजमेंट कोई भी होता है, आप भी हर रोज़ इतने सारे जजमेंट आते हैं, तो ज़रूरी नहीं कि आप उससे अग्री करते हो, क्योंकि आपका भी एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है. तो हमने वही कोशिश की कि कोई भी मुद्दा हो, कोई भी, क्योंकि हम जैसे श्रेया ने बताया कि 10 एपिसोड में 10 हमने मुद्दों को उठाया है. तो लाइक एकदम रियल, कंटेम्प्रेरी टू फ्यूचरिस्टिक, लाइक ड्राइवरलेस कार, लाइक म्यूजिक सॉफ्टवेयर, आलाप, जो छोटे छोटे गानों के छोटे कॉपीराइट इशू पे होता है, dating apps, or so wide range of cases. Exactly. And like he said, that it would be very interesting. The show raises a lot of philosophical questions, and I'm sure when people watch it, they're going to have conversations among themselves. That what do you think? Because when Varun and I were doing our scenes, often we would, as Shriya and Varun, not as Kashaf and Deepak, as ourselves, we would end up asking each other, what do you think? What do you actually think? Exactly. So I mean, आपस में भी, इवन राइटिंग लेवल पे भी हम किसी जजमेंट से हम अग्री नहीं करते थे. लाइक कुछ बातों पे हम नहीं यार ये कैसे है, नहीं यार वो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, नहीं. बट ये ऑब्वियसली एज ए मेकर हमारा एक उसमें हम कहना चाहते हैं, हम किसका पक्ष लेना चाहते हैं, वो होता ही है. बट हम चाहते हैं कि डिबेट हो, ना कि एक जस्ट ब्लैक एंड वाइट ना हो. You have a very unique name in the film, Kashaf. What does that mean? What does Kashaf mean? Sorry, Kashaf का मीनिंग I think she had told me, but I've forgotten. But I must tell you that when I first read or heard the name Kashaf, I felt
attracted to it immensely. I felt like I want to know this person. I'm fascinated. Isn't there like a vibe to that name? Yes, a very Kashaf? unique name. It's a unique name. So turns out also the husband and wife have both different stories as to how this name came about. But apparently they knew somebody who was called Kashaf and just that name. But yeah, I should remember what the name is. Yeah. Later, after We this, should, yes. we will find out. Talking of names, you immediately became Sweetie after the historic success of Mirzapur. I'm now hoping to be just Kashaf also Kashaf. now. So I want to ask you, what do you have to say about the growth of the OTT platform and you as an actor in the last 4 years? It's has been game changing, of course, we all know that. And from the point of view of not just creative fulfillment, but in terms of the opportunities the last few years through the OTT space that it's provided actors, technicians, directors, Directors. producers across the industry. It's just provided so much more employment to begin with, and the scope of different narratives is so much more. We've seen people tell brave stories, we've seen people write such evolved and interesting characters for women where the scope to perform is so much more. And sometimes when actors are asked what do you prefer, films or series, you can't pick or see it through that lens. I think the narrative of series is very different from a film structure, but the game and the business of film is so different that you might not always get a film wherein you're creatively satisfied or where you get to do as much. But here, because the arc and the graph for different characters can be fully explored, actors also have fun. And the line between this very thin line now between like stars and this stardom, Yes. and these typical hero heroine, these lines are blurring now. Yeah. कंटेंट ड्रिवन एक इंडस्ट्री बन चुकी है, like Writers OTT, are writer. given a Exactly. platform, and that is the biggest boon. The fact कि that हमें writing सुपरस्टार is नहीं a चाहिए कि मेरी fiction. कहानी के लिए, मेरी कहानी ये होनी चाहिए, स्टार होनी चाहिए, तो Yeah, story, स्टोरी, absolutely. कंटेंट, तो ये OTT से काफ़ी एक समीकरण बदल चुका है. बहुत ही अच्छे, मतलब हम से बात कर रहे थे, बहुत ही अच्छे दिन है इन टर्म्स ऑफ स्टोरी टेलिंग्स, एक्टर्स, राइटर, सबके लिए. But also ऐसे Yeah. भी है that because there is so much being made, it's very easy to also get saturated हाँ, as a वो भी. viewer and also as makers. एग्जैक्टली. और आपको फिर क्योंकि ना क्राउड हर दूसरे दिन, हर हफ्ते तो एक नई Yeah. वेब सीरीज आती Yeah. है, तो आपको इसलिए कंपटीशन तो quality होता है, important, क्वालिटी. इसलिए एग्जैक्टली. quality important है. आपका Because कंटेंट हर अलग हो, चीज़- कुछ एग्जैक्टली हाँ. कंटेंट अलग हो, कुछ तो अलग हो. आप Absolutely. लाइक फिल्मों में होता है, बल्कि सालों चलता आ रहा है, जो अच्छा कंटेंट वो चलेगा रिस्पेक्टिव इसमें कोई स्टार है, कोई ये है. ऑब्वियसली स्टार का ही होता है कि एक पॉपुलर, एक जनरल मास आपको देखने आते कि इसमें अक्षय कुमार है, अजय देवगन है, शाहरुख खान है. बट अगर जिसमें स्टार्स नहीं है तो आपको आपका कंटेंट शुड बी स्ट्रांग कि लोग उसको देखें. And everything finds an audience. और एग्जैक्टली. Yeah, for sure. आज जैसे मोस्ट ऑफ द लीगल ड्रामास में क्या होता है कि एक ही केस चलता है, लेकिन इसमें 10 अलग अलग केसेस हैं. और Right. एक लार्जर केस भी है. लार्जर केस हाँ. भी है. तो आपने क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखा लिखते समय? जैसे मैं कहा कि हमने हर एपिसोड में एक नया एक मुद्दा उठाने की कोशिश की, लाइक कंटेम्प्रेरी हो, फ्यूचरिस्टिक हो, कुछ भी हो. बॉलीवुड के ऊपर बॉलीवुड भी के ऊपर है. हो, म्यूजिक कॉपीराइट के इशू के ऊपर है, कुछ ड्राइवरलेस कार है, एक वाटर इशू के ऊपर है, लाइक ड्रॉट जो महाराष्ट्र में हर जगह, लाइक तो कोला कंपनी की वजह से कैसे गांव में सूखा पड़ गया है. तो हर एक, और इवन सारे कोर्ट रूम्स हमने अलग अलग कोर्ट रूम दिखाने की कोशिश की. वही कोर्ट रूम एकदम और रियल कि इवन आप देखोगे तो कोर्ट रूम्स पे एकदम टिपिकल फिल्म नहीं है कि 2 कटघरे लगे हुए हैं और बहुत बड़ी स्पेस है. तो एक्चुअल अगर आप किसी ट्रायल कोर्ट में जाओ अलग अलग, तो जज और लॉयर्स के बीच में भाई इतना कम डिस्टेंस होता मुझे है. बिल्कुल यू एड्रेस पता लाइक नहीं दिस, था. ऐसे आप ऐसे बात करते हो. Yeah. आपको ऐसे वो उठ के ना, तो यहाँ बैठा है और आप यहाँ जा रहे हो, ये ऑनर इसने ये किया, फिर वो सनी देओल लाइक यहाँ से वहाँ से वहाँ आता है, ऐसा मौका नहीं मिलता. तो हमने ये काफ़ी कोशिश की कि जितना रियल रख सके उतना रखने की. और जैसे कहा कि कुछ डिबेट हो, कुछ कहने की कोशिश करें हम. Which is इसके why it's unique, I think, because like he mentioned,
I myself had a very different understanding of what our courts look like. Have you ever been? Hopefully, you've not been to court. I have but been. you I'm a have. lawyer. You're a lawyer. I came from law to journalism. Look at this. He's come from law, so I will urge you to watch the show. What did you think of the trailer? This was supposed to be my next question, because the most interesting aspect of Guilty Minds is that you are fighting against Varun Mitra, who is your friend. I mean, you both seem to be equally influential. This is no David versus Goliath. No. So do you feel that will be a very interesting aspect for the audiences to decide whom to root for? People will root for the argument that is being played. Exactly. And that will be more interesting. Also, every episode we have different lawyers that we are fighting against. So for example, Suchitra Krishnamurthy, Girish Kulkarni. Girish Kulkarni is there, and Sanand Varma. excellent actors, all of them who and much more that you haven't seen, who you're going to see in the episodes when you watch them. And that also is very interesting because you see these different personalities. Lawyers are people, right? And they're performers. They have to bring their persona in court. Actors hote hain. Theatrical, right? I mean, lawyers are also actors, clearly. So that's going to be very fascinating for people to watch. And the show is authentic in the sense that, of course, certain liberties have been taken, like in Supreme Court, you speak English. But here we've had to sort of speak Hindi. But for example, there's no gavel. जो नहीं होता आपको पता होगा जो नहीं होता इंडियन इसमें पता नहीं वो कहाँ से शुरू हुआ मुझे लगता था है because that's what you जैसे कुछ जगह पे जब सेटअप होता था हमारा जो आया था तो उसमें रख देते थे पर लाइक आर्ट लगे हम ये किसने रखा तो ये तो इवन विटनेस बॉक्स खैर आप तो लॉयर है तो आपको सब कुछ पता है तो art direction I have to express this that credit goes to the art director production for designer, sure the production designer because when you watch it you will also see that it's so realistic that even when I entered I was like why isn't it looking dramatic, where is my fancy walk, why is the judge right here, the size is so small, it's so cluttered and crowded. But हमने उसके अपोजिट है सुप्रीम कोर्ट हमने उसका एक ग्रैंड एक देने का कोशिश किया आप देखोगे तो हमने बहुत ही एकदम उससे मैच करने की कोशिश की है अगर आप और इवन जालना कोर्ट एक रूरल एरिया का कोर्ट हो या दिल्ली के लाइक पटियाला कोर्ट हो इवन आप अभी देखोगे जब आप देखोगे कि पटियाला कोर्ट में ना आप गए कभी पटियाला कोर्ट नहीं सर तो वहाँ पे अभी भी ना वो फायर प्लेस होता था तो क्योंकि वो पटियाला हाउस था ना वो पुराना एक इसका तो अभी भी उसमें फायर हाउस है फायर हाउस कहते हैं जहाँ पे आग जलती है फायर प्लेस अभी भी है तो अगर आप नोटिस करोगे जब एपिसोड देखोगे अभी हमने भी वहाँ पे फायर प्लेस बनाया है छोटा सा तो प्रोडक्शन डिज़ाइनर क्योंकि हम जब रेकी कर रहे थे तो हम सारी टीम लाइक विद प्रोडक्शन डिज़ाइनर मैं डीओपी सब गए थे हमने काफ़ी दिल्ली के कोर्ट्स को विजिट की और हमने कोशिश की कि रिप्लिकेट करें जैसे इवन चेयर से लेके टेबल्स स्टेनोग्राफर से लेकर कैसे इवन आप छोटी छोटी चीज़ें आप पेन लटका हुआ है तो पता नहीं कितने फ्रेम में आपको दिखेगा बट बहुत कोशिश की हमने कि एक रियल एक फील है इसलिए थर्ड एपिसोड जिनकी बात कर रही थी बहुत ही इनका एक इमोशनल परफॉर्मेंस था इसमें वरुण श्रेया दोनों का तो वो जब हम बनने के बाद गए थे देखने जस्ट बिफोर वन डे बिफोर दैट शूट तो लगा कि हम उस कोर्ट में हैं लगा कि हम उस दिन का कुछ महक और था बहुत ही I think all of this also helped our performance. Exactly. You know, just knowing that we're part of something that's authentic, knowing that we're in safe hands, because when you're dealing with stories like these or having such conversations, discussions, you don't want to look stupid. That's the last thing because we're coming from a good place. So hence with Shefali, Jayant, their experience, the team, we were rest assured that we were in safe hands with respect to our approach because they come from experience. And I think it's safe to say that from India we haven't seen an authentic original courtroom series, right? There is no original courtroom drama series. Criminal was a remake, right? Criminal Justice Yes, was a remake.
Yeah. It was not an adaptation, Right. correct? It Yeah. was not an original. Yeah, it was a remake. It was Yes. a remake. So in terms of an original Original one, content. We are the first, I think. We are the first, and we pride ourselves in that. You know, the series was being made when we were in the middle of the pandemic. Right. So what were the challenges that you both Before faced? the pandemic. Before when? Oh, before the में pandemic. शुरुआत We were in की the hotel that the Italians were in. So what were the? Did you face any challenges while shooting the बहुत series? बहुत ज़्यादा लाइक शुरुआत हुई उसके बाद हमने कुछ 20-25 दिन शूट किया था उसके बाद फर्स्ट वेव आ गई फिर 7 महीने 8 महीने तो बंद ही था सब कुछ बिकॉज ऑफ लॉकडाउन एंड लेकिन हम जब वापस शुरू किए तो हमने बहुत ही जो कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए तो मुश्किल तो हुई सबसे क्योंकि हम सारे दिन वो एक्टर्स को ऑब्वियसली मास्क नहीं पहन सकते लेकिन बाकी सारा क्रू हम दिन भर मास्क पहनते थे और सारा सैनिटाइजेशन वगैरह सारा बहुत हमने हमें उसका ख्याल रखना पड़ा That was पूरा not क्रू easy का though. इजी नहीं था सब में डर था और कोई हमारे हर तीसरे दिन हमारा कोविड टेस्ट हुआ करता था तो हमने एक हम बायो बबल तो नहीं कर सकते क्योंकि सब घर जाते थे लेकिन हमने बहुत कोशिश की And कि Amazon was कोई भी following mandates. एग्जैक्टली They were following, unlike a lot of other people. एग्जैक्टली So hence, हमने बहुत ही सबका ख्याल रखा और हमने सारे कोविड प्रोटोकॉल जो भी गवर्नमेंट प्रोटोकॉल्स हो या अमेजोन कोविड प्रोटोकॉल्स हो सारे फॉलो किए कुछ हमें लेकिन हमने कॉम्प्रोमाइज कोशिश नहीं की हमें जो चाहिए था हाँ कुछ जगह पे हमें बिकॉज क्राउड सबसे बड़ा है कोर्ट रूम में तो आपको क्राउड दिखाना पड़ेगा तो कुछ जगह हमें थोड़ा बहुत ये करना पड़ेगा क्योंकि हम उस टाइप का क्राउड नहीं दिखा people पाए cooperated Exactly. with us, you know. बहुत cooperate बहुत किया लोगों ने because cooperate बहुत किया। मुश्किल था to be in a setup wherein everyone had to just be with their masks on. We would have a team just reminding people to wear their masks. Exactly. But now that I look back, just imagine the journey of the show. Writing, of course, 4 years and all of that. But 2 years of filming it over a period of time, and for us to constantly, I don't think we ever switched off. We were switched on for 2 years because we were in that zone, and it's such an emotionally driven character in every possible way that I feel like I had to be in Kashaf's Right, zone. right. So just the fact that the show has got a release, we're able to speak in person, we're going to put it out there the way we have, is something we don't take for granted because we know how everything has been on Zoom and what life Exactly. went through. So even Yes, just doing right. this is like a big deal for us. नो कि फर्स्ट वेव हम सेकंड वेव में भी हम Second wave में हुए भी। थे सेकंड वेव जो डेडली वेव था उसके Last फिर year, वापस हाँ। एग्जैक्टली फिर वापस हम रुक गए फिर हम शुरू किए और पोस्ट प्रोडक्शन थर्ड वेव में तो मैं हमेशा कहता हूँ कि यार कोविड ने तो 3 सीजन कर लिए हमारा 1 सीजन आ रहा है मुझे बहुत गंदा जोक अभी मेरे जहन में ये आया तो नहीं था मेरा जोक कि तारीख पे तारीख नहीं लॉकडाउन पे लॉकडाउन पे लॉकडाउन एक्चुअली Exactly. वो हो रहा था You know, Shriya, it's 6 years for you in Hindi cinema because Fan released on the 15th of April 2016. Oh my God. So how do you see your journey in these last 6 years and how was that experience like? Wow, it's been 6 years, huh? It doesn't feel like it's been 6 years. I am somebody who will embrace everything. I embrace my ups, I embrace my downs. I don't think of things not working out as failure. I think of them as just events in your life. And I feel like I am blessed because the projects I've got, they have really helped me build myself as an actor, which is why today I reached a point where I could be trusted to play a Kashaf and headline an Amazon show. So acting and the life of an actor is a very unpredictable journey. It's not just based on talent, you know. Yes, there's hard work involved, but you know, there is a facet of kismat, of destiny, and sometimes it can be very hard when you put all of yourself into something and maybe that does not work out, that project, or it doesn't do well. So I, in these years, have learned to really enjoy the journey and process and then slowly let it go and detach myself to the outcome. But last year actually has been very interesting because I have been able to work on some incredibly exciting projects, all of them that will release, you know, from comedy where I'm a butcher to in the world of news reporting to, you know, season 2 of something like a Crackdown, which is espionage. So the range has been there and I just hope to be able to establish myself as a versatile and a bankable actor, you know. And I just wish I also get more interesting opportunities in films because that is
a medium I have not done too much of, and I would love to do a film. In fact, I'd love to, because I love to sing and dance, I'd love to do an out and out commercial film also. Musical, romantic. In fact, इसमें मुझे डांस करने का मौका मौका दिया मिला, इन्होंने, दिया। because I was dying to. So somewhere I feel like no matter what path you're taking, you can just swish wash and cross over. And lastly, what has been the one takeaway for the two of you from Guilty Minds? आप बताइए। आपके लिए क्या रहा है सबसे इम्पोर्टेंट Takeaway. लेसन या टेक अवे? सबसे बहुत कुछ है। I know एक श्रेया प्लीज। एक तो मेरे लिए है ये किरदार, a character like Kashaf Kaze is very hard to come by. It's perhaps been my most exciting, challenging part just because of how complex it is, and at the same time this team. Such a collaborative team where actors were allowed to be part of the brainstorming process, where Right. Agree. everybody was open to healthy debate and discussion, where you felt like you have a creative say. That's rare. Yes. That experience is rare. So for me, all of that. राइट सर टीम वर्क was- लाइक श्रेया ने कहा तो ऑब्वियसली हमने एक शो बनाया, बट इस पूरा मेकिंग में जो हमने इतने कठिनाइयों से लाइक लॉकडाउन जब हम शूट Survive. करते तब दिल्ली राइट्स भी हुए थे, बट ये हुआ था, सब सर्वाइव करके हमने एक शो बनाया और एक हम सारे टीम एक फैमिली बन के काम किया हमने। क्योंकि हम सारे एक्टर्स को मैं और शेफाली सबको बच्चे मानते, लाइक हम लोग हमारे लाइक हम दोस्त बन जाते हैं। हम किसी से एकदम प्रोफेशनली बात कर ही नहीं सकते बेसिकली। हम सबको, इसलिए सारे लोग हमारे सारे HOD, सारे असिस्टेंट, सारे एक्टर, सारे इवन ईच एंड एवरीबॉडी, तो हम उसको एक फैमिली, एक अपना समझ के हम इस प्रोजेक्ट पे बहुत लोगों ने काम किया। वो सबसे अच्छी बात है किसी भी, क्योंकि फिल्म मेकिंग इज़ अ टीम वर्क। अगर कोई तो आपकी एनर्जी जो है ना आपके सेट पे दिखनी चाहिए, वो आपकी ना हर किसी लगे कि यार ये मेरा काम है, मेरा ना कि जस्ट एक आपने आया मेरे को काम मिला कि तेरा, तो वो एनर्जी, तो वो हमें प्यार, वो रिस्पॉन्स सारे टीम से मिला, वो सबसे बड़ी बात है। ऑब्वियसली हम एक तो अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और तो एक कहानी बताने की कोशिश कर रहे हैं, बट ये जो प्यार होता है लोगों का वो बहुत ज़रूरी होता है एक रिलेशनशिप से, तो हम दोनों की बहुत मैटर करता है। तो Thank you so much for your time. Looking forward to watching the show and all the best, ma'am. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.